As the Festival of Lights draws near, devotees are facing confusion over the exact dates for Diwali celebrations this year, particularly the rituals of Paya Shraddha and Deepadan. According to 5 calendars approved by the Sri Jagannath Temple, Shyama Puja along with Paya Shraddha and Deepadan is to be observed on October 20. However, several other calendars mark October 21 for the same rituals, which coincides with a government holiday. In response, the Mukti Mandap Pandit Sabha has issued a press note urging devotees to follow the temple-sanctioned calendar, emphasizing the importance of performing Paya Shraddha and Deepadan on October 20. Authorities and religious scholars have appealed for calm and adherence to the temple's guidance to maintain the sanctity of these rituals. Many devotees remain concerned about when Kali Puja will be performed and the correct day for offering Paya Shraddha. Experts stress that following the temple-approved dates is crucial for ensuring that these age-old traditions are observed correctly and respectfully. 20 तारिख दिन 3:23 समय सूर्य अस्त चतुर्दशी पर्व शेष हम एवं 3:23 पर ठारू रात्रि दीपावली एक रात्रि उत्सव एवं पया श्राद्ध रात्रि उत्सव काली पूजा रात्रि उत्सव लक्ष्मी पूजा रात्रि उत्सव तेणु ये सब उत्सव को पालन करने 3:23 रु आरंभ हो संध्या समय संध्या एंटायर संध्या दीपावली जो अंधकार रात्रि से आम पया श्राद्ध करूँ एवं जो माने काली पूजा करती लक्ष्मी पूजा करती एवं तत्सहित दीपदान प्रक्रिया आरंभ हुए एवं आतसबाजी किसी अंश करा जाए किंतु सूर्य पराग हो सूर्य अस्त हो ता परदिन 5:15 बेलू 16 बेलू एवं तापर अमावास्या तिथि 5:30 पर्यंत रोचे 20 तारिख दिन केवल दीपावली अमावास्या हम एवं काली पूजा हम एवं पया श्राद्ध हम एवं दीपदान कार्य हम जो मैंने सनातनी से 20 तारिख दिन एक कार्यक्रम करेंगे जो मैंने हिंदू प्राण को भल पाती हिंदू जो मान दाबी करती समस्ते 20 तारिख दिन करवा उचित तेणु सरकार 20 तारिख को छुट्टी घोषणा करूँ जदि 21 कर चतुर्दशी सहित अमावास्या मात्र 16-14 मिनिट रोचे तथापि 20 तारिख हूँ पूरा मात्रा रात्रि अमावास्या तेणु ये 20 तारिख करा जाऊ एवं 21 तारिख जदि रखा जाऊ एवं 20 तारिख छुट्टी घोषणा करा जाऊ।